बच्चों, so let's read this question. Mention two rights which are important constitutional rights but not fundamental rights. So इस question में हमें बताना है ऐसे दो right जो कि एक important constitutional right तो है, पर we cannot consider them fundamental rights. So the key concept of the question will be, पहले हमें इसके लिए समझना होगा what are constitutional rights and what are fundamental rights और इन दोनों के बीच में difference क्या है. So fundamental rights, fundamental rights are a subset of constitutional rights. They are a subset of constitutional rights. So, that are considered to be essential for the protection of individuals' liberty. That are essential for the protection of individuals' liberty. अगर हम बात करें इसकी, so they are explicitly mentioned in the constitution and cannot be taken away by the government under any circumstances. ये जो हमारे rights होते हैं ये constitution के अंदर लिखे गए हैं और government इनको कैसे भी करके नहीं हमसे छीन सकती. So they are explicitly written, or we can say mentioned, in the constitution and cannot be taken away under any circumstances by the government. On the other hand, if we talk about constitutional rights, so constitutional rights जो हमारे होते हैं, they refer to all the rights that are enshrined in the constitution, चाहे कि वो फंडामेंटल या फिर नॉन फंडामेंटल राइट्स भी हो सकते हैं. अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो फंडामेंटल राइट्स हमारे 6 होते हैं: राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम of religion, right to constitutional remedies, and we have our cultural and educational rights, and these are all the fundamental rights that are provided. And if we talk about constitutional rights, so constitutional rights ये भी include करते हैं जो हमारे fundamental 6 fundamental rights है, और वो non fundamental rights को भी include करते हैं. So these are these are the constitutional rights. तो अगर हम बात करें दो ऐसे कोई rights, two rights जो कि important तो है, which are important constitutional rights but not fundamental. तो ऐसे दो rights हमारे हैं, right to vote and right to property. So अगर हम right to vote की बात करें, first is our right to vote. If we talk about right to vote, अब right to vote होता क्या है? तो right to vote is gives the citizens the power to elect leaders of their choice and hold elected leaders accountable. So the right to vote gives the citizen the power to elect leaders of their choice and hold elected leaders accountable. Hold elected leaders
To remove those who do not represent their values and replace them with the leaders who will fight for their vision of the future. To remove those who do not represent their values. सो बेसिकली राइट टू वोट एक 18 साल का या 18 साल से ऊपर का इंसान वोट कर सकता है टू you know it to elect their leaders and of their choice and hold elected leaders accountable, and we can say to remove those who do not represent their values और अपने चॉइस का लीडर ला सकता है. अगर हम बात करें सेकेंड ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की जो कि एक फंडामेंटल राइट नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी. सो सेकेंड विल बी राइट टू प्रॉपर्टी. सो अगर हम राइट टू प्रॉपर्टी की बात करें, सो this right from the list of the fundamental rights, it is the amendment made a legal right under Article 30A in the Constitution. और इस ये स्टेट करता है, this right states that no person shall be deprived of his property. No citizen shall be deprived of his property. ये है राइट टू प्रॉपर्टी. सो पहले जो राइट टू प्रॉपर्टी था एक फंडामेंटल राइट था, बट अब वो फंडामेंटल राइट नहीं है. इट इज स्टिल कंसिडर्ड एज एन इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एज इट प्रोटेक्ट्स एन इंडिविजुअल्स राइट टू ओन एंड एक्वायर प्रॉपर्टी. So these are the two rights which are constitutional rights but are not considered as the fundamental rights. I hope you understood the question well. Best of luck.